ओके जी। कैसे हैं आप लोग सब लोग? एक क्लास लेते हैं। उस दिन मैंने क्लास रिकॉर्ड किया लेकिन बीच में एक दफ़ा इंटरनेट ऑफ हो गया था और उसके बाद यू नो दूसरी दफ़ा भी स्क्रीन ऑन नहीं थी। सो apologies for the delay। अभी I'll go through it now। share my screen। अच्छा, किसी ने कहा था कि वीडियोस को एचडी में अपलोड किया करें। सो whenever you're viewing these videos, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, वो यूट्यूब की तरह का ये आपके पास यूआई होता है। उसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है, व्हेन यू क्लिक ऑन सेटिंग्स, तो आप वहाँ से उसको 720 पे लेके जा सकते हैं। सो फील फ्री टू यूज़ दैट। उससे आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपका इंटरनेट 720p नहीं चला रहा होता, तो यू नो लेट मी नो, फिर कोई और सीन कर लेंगे, मे बी जूम, समथिंग एल्स। एनीवे, sure. Today we're doing basically um, वही मॉडल था जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, but we want to add a few things in here। you know हमारे पास, sorry, यही हमारे पास मॉडल है, but we have to enhance this model a bit। So आपका ये आपका बुक में आपका पोर्शन है 4.2, और it's enhanced electronic assembly। um, and when you read this, so there are few changes that we want to traffic into our model। um, you know so कहीं पे जो आपके पास डाउन टाइम आ रहा है, एंड कहीं पे जो आपके पास रिसोर्स की स्केजुलिंग थोड़ी सी करनी है, you want to increase or decrease the resources। um, so and then you have failure, और कुछ हमारे पास frequency थी। So essentially what we want to change in this model, one sec, so we want to essentially add a schedule, want to add schedule, and want to add resource capacity। Then we want to add want to model failures, and want to model these at the want to model these at you know want to model these at आपका क्या कहते हैं उसको, सीलर के ऊपर, सीलर operation। And third one is essentially frequency, or let's say इसको कहते हैं कि हम there's some stuff that we want to count or review। In any way we'll go over it। So essentially हम क्या करना चाह रहे हैं, जो आपका पहला है schedule resources, ये जो हमारे पास रिवर्क की रिसोर्स है, हमने इसके we want to change the resources from 1 to 2 for a certain period of time। We want to change the resources to 2, or for a certain time we want to keep that resource equal to 1। So let's, if I click over it, ये हमारे पास, when we did this edit, हमारे पास इसकी not this one actually, हमारे पास इसकी एक ही resource थी, but we want to increase this resource। don't get confused, ये जो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, this doesn't show us the resource actually। हम इसकी resource capacity को we assumed कि इसकी जो है आपके पास एक आपके पास इसकी रिसोर्स है, या एक ही आपके पास जो है वो मशीन पड़ी हुई है। What we want to do now is कि हम इसको for a certain instance in a certain shift हम इसको 2 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, and we want to see that change। और फिर वो आप उसको 2 के ऊपर, मतलब किस तरह से आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब द कैपेसिटी हैज टू फॉलो, मतलब क्या आपकी थ्रू आउट ये सिस्टम आपका 2 मशीन्स के ऊपर चलेगा, या आपका फॉर सर्टेन आप उसको कुछ चेंज करेंगे कि इतने टाइम के लिए एक मशीन के ऊपर चलना है, एंड फॉर सर्टेन पीरियड जो है वो आपने दूसरी मशीन के ऊपर चलना है। So we do that through scheduling। हम उसकी एक schedule सेट करते हैं, and that schedule basically tells this arena कि for this instance
आपने एक रिसोर्स चलानी है, एंड फॉर दिस इंस्टेंस आपने दो रिसोर्सेज चलाने हैं. So we do that through schedule and resources, and we do that in this part. Then we want to model failure कि हमारे पास ये sealer process जो काम कर रहा होता है throughout its operation. What we want to do is we want to show कि हमारी sealer operation at certain instances इसमें break आ जाता है, it fails, और फिर ये fail हो जाता है and then it stops working for a while. So essentially, अगर हमारे पास 120 minutes, for 120 minutes this is working, and for 4 minutes there is a downtime जो कि इसमें आ जाता है after every 120 minutes. I believe that is कि हर 120 2 घंटों के बाद जो है ना 4 मिनट के लिए machine stays down based on data that is collected. And then essentially we want to know कि हमारे पास यहाँ पे when we have the क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रिवर के ऊपर हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं, सो वी वांट टू नो कि क्या हमें यहाँ पे स्टोरेज रैक्स रखने चाहिए सिस्टम के अंदर या नहीं. सो व्हाट द स्टोरेज रैक्स विल डू कि जब आपके पास पार्ट्स का क्यू बनता जाता है, सो वी अवॉइड द क्यू और उन पार्ट्स को रख दिया जाता है इन स्टोरेज रैक. और एक जो आपके पास स्टोरेज रैक होती है, सो इफ यू गॉट वन रैक, so it keeps up to 10 parts. So we want to see कि हमारे पास कितने parts यहाँ पे बन रहे होते हैं, and you want to categorize those number of parts into a quantity of racks कि हमें कितने racks यहाँ पे रखने चाहिए in order to optimize the parts in these racks. वो depend करता है कि आपका queue कितना बनता जाता है. And essentially जब पे ये वाला queue बन रहा था, depends कि क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा parts आ रहे हैं, so it makes sense कि आप उसको rack में रखें, and if it doesn't, so you don't need to do it. So these are essentially by and large a couple of things that we're looking at. In order to start this, ठीक है, we want to know कि हमने यहाँ पे capacity को बढ़ाना है. In order to increase that, आपने आना है resource के ऊपर. आपके पास हमने जो जितने पहले यहाँ पे काम किए थे, these were our flow modules, और अब यहाँ ये जो जितने आपके पास ये blue और white spreadsheets हैं, these are basically और क्या कहते हैं उसको, data modules. And in these data modules we want to know कि क्या हम changes करेंगे, the changes that we want to have over here वो in spreadsheets के अंदर की जाती है. So for the first one we want to know कि कितना हमें sealer की capacity है. We want to increase this capacity. Actually a better way of doing this is कि पहले मैं इसके schedule को set करूँ. 1 second. Okay, यहीं पे कर लेते हैं anyway. सॉरी, रिवर की कैपेसिटी. अच्छा, हम चाह रहे हैं कि रिवर की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाए. इट्स नॉट अ फिक्स्ड कैपेसिटी. रिवर की कैपेसिटी एट सर्टेन इंस्टेंसेस, रिवर इज एसेंशियली या वो 1 पे रहेगा और either it's gonna go to throughout जो आपकी शिफ्ट है, it's gonna be either at 1 or either at 2. We want to model this thing कि आप उसको स्केड्यूल पे लेके जाएं. In order to do that, we want to know कि हम इसकी टाइप जो फिक्स्ड कैपेसिटी है, हम उसको बेस्ड ऑन अ स्केड्यूल लेके चले जाते हैं कि दिस फॉलोज अ सर्टेन स्केड्यूल, और वो स्केड्यूल की बेस के ऊपर जो है it's gonna increase to 1 and it's gonna decrease to 2. So like that, वो analogy आप ले लें. So now जब आप यहाँ पे आते हैं, when you do this आपका based on schedule, तो आपकी ये वाली रो हाइड हो जाती है, this stops working, और आपके पास यहाँ पे दो और कॉलम्स ऐड हो जाते हैं. In the first one you have to add the name, हम इसको कहते हैं viewer schedule, और second one आपका होता है कि other any what rules is this schedule going to follow, like आपका wait module, ignore module, preempt module. मेरा ख्याल है अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए यहाँ पे छोड़ के मैं स्केड्यूल के ऊपर चला जाऊँ, तो it would make a lot more sense to you. 1 second. इसको यहीं पे छोड़ते हैं. I'll just explain schedule और फिर शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए. हम आते हैं
स्केड्यूल के ऊपर वी डोंट हैव एनीथिंग इन स्केड्यूल एट द मोमेंट। उस यहाँ पे कुछ ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। वी वांट टू नो हम अपने वहाँ पे कौन सा आपने स्केड्यूल सेटअप करना है, दैट विल बी रीवर्क स्केड्यूल। आपने वहाँ पे अगर उसका नाम दे दिया है सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सर्टेन स्केड्यूल। अच्छा, इसकी कैपेसिटी आपके पास है इट्स अ कैपेसिटी आपकी 1 हो रही है, आपकी 2 हो रही है, सो वी वांट टू कीप दैट ऑन कैपेसिटी। टाइम यूनिट्स आप इसको अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने उसको 1 ही रखना है। लीव स्केल फैक्टर आपका फाइल नेम कुछ भी नहीं डालना। एंड वी वांट टू ऐड द ड्यूरेशंस। ड्यूरेशंस का क्या मतलब है कि किस टाइम के लिए आपके पास एक कैपेसिटी होगी या एक मशीन होगा, और किस या कितने टाइम के लिए आपके पास दो मशीन या कैपेसिटी आप दो के ऊपर लेके चले जाएंगी। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करते हैं इन ड्यूरेशंस। एंड इन ऑर्डर टू ऐड समथिंग हियर इट्स कपल ऑफ वेज। मैं इसके ऊपर 1 सेकेंड, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और क्या कहते हैं इसको, आपका राइट क्लिक we can do this via spreadsheet, we can do this via dialogue। हम इसको dialogue के थ्रू करते हैं। ठीक है, so your name is going to be rework schedule। आपका टाइम आवर्स में ही रहेगा and we want to add the schedule here, so want to click on add। value आपने 1 रखनी है, so want to keep the value at 1। और मैं इसका duration जो है आपके पास बुक में है कि आपने 16 आवर्स की शिफ्ट चलानी है, एंड फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स इट्स गोइंग टू रन ऑन 1 कैपेसिटी, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स आपकी कैपेसिटी वहाँ पे 2 के ऊपर चले जाएगी। बड़ा कीप मैं ड्यूरेशन को 7 पे रखता हूँ फॉर नाउ। सो मेरी पहले 7 घंटे की जो सिमुलेशन चल रही है उसके ऊपर मेरी कैपेसिटी 1 होती है। एंड देन मैं फिर से क्लिक करना है और मैं कहता हूँ कि आई वांट द कैपेसिटी टू गो अप टू 2 नाउ, क्योंकि अब मैं 2 मशीन चलानी है और दिस इज गोना बी 7 अगेन, तो वो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट 7 आवर्स के ऊपर लेके चला जाता है। So the capacity increases at 7। So first 7 hours you're having 1 capacity, the following 7 hours you're having 2 machines, your capacity is increased to 2। There is another way of doing it जिसमें मेरा ख्याल है आप उसको आप उसको hourly segmentation उसकी कर सकते हैं। Probably something like एक ग्राफ के थ्रू उसको करना होता है। believe it's properties नहीं है, somewhere यहाँ पे कहीं से है, it's done through a graph as well, but anyway our purpose here is served। So we've set up a schedule for resource increasing and resource decreasing through our schedule module। Now we come back to resource और हम यहाँ पे इसको अब based on schedule and schedule name is rework schedule, तो ये आपका schedule कौन सा होगा? This is going to follow the schedule that you just entered here for the 14 hours, 7 hours on one and the next 7 hours on two। वो आपका ये schedule यहाँ से pick कर लेता है when you do the appropriate naming conventions and you set up this sort the settings over here। now we get to know कि schedule rules क्या होते हैं। So जो अभी तक आपने किया था that was schedule की time set करना, but how do these schedules get implemented during एक जब आपके पास एक simulation या आपके पास run चल रही होती है, so how do you actually implement this, how do these behave while implementing। so उसके लिए we have three different processes उसको कहते हैं, 3 different rules। they're explained here in your book, this one, okay। So first up we look okay what a preempt rule does। A preempt rule, how does a preempt rule work? Let's say for simplicity आपका ये जो पीरियड है ना यहाँ पे, so this is one period। अच्छा यहाँ से अगर आप इसको देख लें so this signifies कि मेरे पास 12 बज रहे हैं, and this time signifies कि मेरे पास 1 बज रहा है। So it follows up to here as well। So 12 से 1 के दरमियान in this time period consider कि आपकी कैपेसिटी 0 पे आ जाती है और ये आपके पास एक फेलियर होता है। आप यहाँ पे कोई भी सर्विसिंग जो है ना वो यहाँ पे नहीं कर रहे होते। So there is a capacity breakdown
in a way या कैपेसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाती है. So how this gets modeled, how a preempt works, कि ये जो आपके पास बॉक्स है, this one particularly, this shows कि यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग चल रही है for a certain part, certain process is ongoing on a certain machine or a certain आपके पास जो प्रोसेस मॉड्यूल है, वहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस इज गोइंग ऑन अ सर्टेन पार्ट. अब आपने प्रीएम्प्ट रूल सेलेक्ट किया हुआ है अपनी सिमुलेशन के अंदर कि जो भी आपके पास, जब आपके पास स्केड्यूल की इम्प्लीमेंटेशंस चेंज हो जाती हैं, सो दे एक्ट according to the preempt rule. And what a preempt rule does is कि यार मेरा माइक चल रहा है कि नहीं, वन सेक. What a preempt rule does is कि अगर आपके पास पार्ट की प्रोसेसिंग चल रही है, सो इट स्टॉप्स प्रोसेसिंग ऑन दैट पार्ट, और वो उस पार्ट को उस प्रोसेस मॉड्यूल से हटा देता है. इट रिमूव्स दैट पार्ट, प्रोसेसिंग इज स्टॉप्ड इमीडिएटली. आपका ब्रेक डाउन या आपका जो स्केड्यूल्ड डाउन टाइम होता है, दैट गोज थ्रू, और जैसे ही आपका सिस्टम बैक टू इट्स नॉर्मल आपकी कैपेसिटी के ऊपर आता है, सो वो क्या करता है, वो वापस उस पार्ट को ले आता है एंड इट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग अगेन. सो इट्स काइंड ऑफ यू नो यू नो पार्ट की जो प्रोडक्शन होती है, इट स्टॉप्स प्रोडक्शन इमीडिएटली. इट फॉलोज जो आपका स्केड्यूल्ड आपके पास कैपेसिटी डिक्रीज होता है, वो उसको फॉलो करता है. एंड व्हेन we're past this period, जब आपके पास दोबारा when you've got 1 p.m. again, so उस टाइम के ऊपर आप दोबारा अपने कुल पार्ट को ले आते हैं. Arena brings back the part for processing. So I hope I've explained this well enough. What a preempt rule does, it's an immediate takeaway of the part that is being processed. It follows the downtime, और जब आपके पास downtime end होता है, it brings back the part that had stored earlier on its continuous processing. So आपका जो scheduled break start और scheduled break end है, उसके दरमियान it completely stops processing. It follows the complete time of breakdown and then it again starts processing. So that's basically your preempt rule. What a wait rule does, okay, wait essentially आपके पास लेट्स आपकी पार्ट की प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है, और अब आपकी जो जो ब्रेक है, जो आपका डाउन टाइम है और आपकी कैपेसिटी डिक्रीज है, वो स्टार्ट हो गई है. So when that has started, wait rule according to its name, it waits for the part to finish processing. तो वो immediate कोई भी एक्शन नहीं लेता आपका wait rule, but it lets this part to get over with